सो गाइज मैं वापस आ चुका हूँ। उसका वजह ये है कि मुझे पढ़ना है अभी। और मेरे को पापा ने एडवाइस दी है कि तू जब बात करता है पढ़ाता है तू ये क्यों बोल रहा है मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप चाहते हैं मैं पढूं। तू ये नहीं कहना और तू पढ़ा। क्वेश्चन जब तक सोल्यूशन ना करे पूरा तब तक कुछ मत बोल इधर उधर। तो चलते हैं वापस क्वेश्चन पे। अब जैसे ही हम यहाँ पे आए तो ये लाइन ऑफ कोड जो है रिटर्न 5 इंटू फैक्टोरियल -1। ठीक है, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो ये पास हुआ। अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो लाइन है ना यार ये मुझे क्यों नहीं समझ में आ रही। तो ये जो लाइन है ये कह रही है कि 5 को मल्टीप्लाई करो और फैक्टोरियल को कॉल करो और फैक्टोरियल को कॉल करते वक्त 5 पास कर दो। बताओ भाई, ये भी भला कोई बात हुई। ठीक है। आह, ठीक है। कैन सो it multiplies 5 with factorial 4। मुसैब भाई आई मिस यू यार, यू आर अ गुड लैड। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। तो जब तक ये क्वेश्चन नहीं होगा मैं कोई डिटेल शेयर नहीं करूंगा अपनी लाइफ की। तो इट मल्टीप्लाइज 5 विथ फैक्टोरियल 4। ठीक है, एक सेकेंड, हम यहाँ पे कुछ रिटर्न तो नहीं कर रहे गाइस। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है ये रिटर्न करेगा एक तो 5 और फैक्टोरियल 4। रिटर्न द सम ऑफ दिस, रिटर्न दिस वैल्यू, व्हाट इज दिस। चलो भाई बड़े चंगे नाल हो जाएंगे आज। 5 को मल्टीप्लाई करो किस वैल्यू से जो आएगा आफ्टर वी डू दिस। आई डोंट थिंक आई एम श्योर बट इन प्रोग्रामिंग आई एम यूजुअली श्योर। तो फैक्टोरियल को हमने अंदर वैल्यू क्या रख दिया, इफ वी हैव पास्ड द वैल्यू ऑफ 4 टू इट। ओके, so that means is if 4 is equal to 0, no by no, next line return and 4 star। so अब मेरा क्वेश्चन है कि वैल्यू रिटर्न होगा तो होगा क्या। हाँ, तो यहाँ पे हमने देखा हमने 5 को मल्टीप्लाई किया फैक्टोरियल 4 के साथ और फैक्टोरियल 4। ठीक है, ये कह रहा है कि यू हैव टू डू दिस। बट मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ओके, ठीक है। तो गाइज अब ये जो है, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और तो गाइज 4 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं फैक्टोरियल को पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं पास, 3 कर रहे हैं पास। लेकिन मेरा सवाल है, ओके ओके ओके, मेरा सवाल है कि जब हम ये स्टेप लिख रहे हैं तो ये एक तो 4 रिटर्न कर रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर रहा है फैक्टोरियल 3 से। अब फैक्टोरियल यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रही है, फंक्शन कॉल हुई तो फैक्टोरियल में गया, पास हुआ, n का वैल्यू हुआ 3। तो जैसे ही वो वैल्यू आया तो उसने क्या किया। ठीक है, हम आराम से चलेंगे, एक से हम वी विल गो एक्सट्रीमली स्लो, नथिंग टू वरी। तो 5 इंटू, चलो एक काम कर देते हैं, ये सारा कॉपी पेस्ट मार देते हैं ये क्वेश्चन। नहीं यार, मेरे पापा क्या ये मैंने अपने पापा से नहीं सीखा कि कॉपी पेस्ट मारो।
और इस वक्त मैं अपने आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मैं कंपनी का काम नहीं कर रहा कि मुझे समझना होगा ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है। इफ फैक्टोरियल के अंदर चलते हैं। n का वैल्यू हुआ 4, क्योंकि यहाँ पे था n-1। यहाँ पे क्या था लाइन? यहाँ पे लाइन थी n-1। तो अब क्या होगा? अब हम चलेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? फैक्टोरियल के अंदर जा रहे हैं हम, और यहाँ पे पास हो रहा है 4। ठीक है। अब क्या होगा? अच्छा, अब मुझे समझ में आया। तो ये लूप चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, 5 पास होगा। नहीं 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 नहीं, ना 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 ना। मैं कह रहा हूं जो वैल्यू रिटर्न होगा वो स्टोर कहाँ होगा? ठीक है। मैं कह रहा हूं यहाँ पे अगर हम वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, 5 × फैक्टोरियल 5 - 1, तो रिटर्न दिस। अब ये स्टोर कहाँ होगा? ठीक है। तो ये है कि 5 × फैक्टोरियल 4। हम्म। तो अब यहाँ पे आया फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल के अंदर 4 है। ठीक है, इफ 4 is equal to 0। ठीक है। क्या 4 = 0 है? नहीं। नो। अब हम चलते हैं आगे। रिटर्न n का वैल्यू है 4 × फैक्टोरियल। खुदाया। हाँ, 4 - 1। ठीक है। क्या हुआ? रिटर्न 4 * फैक्टोरियल 3। अब हम मगर यार वो सारे वैल्यू स्टोर कहाँ हो रहे हैं? वेयर आर रिटर्न वैल्यू स्टोर? ये मैंने क्वेश्चन भी नहीं पूछा यार। Return values are stored in the call stack. Each function's call stack frame until every time is called, Python creates a new stack frame that contains value of n. ठीक है। The line of code to continue. Okay. Factorial 5. Waiting for factorial 4. Call factorial 4. Another frame is pushed. You waiting for factorial. Still no value. Call continue. Factorial 3 waiting for the one value is the one is it. Factorial 3 return। तो ये कुछ भी नहीं था। ये मैं गधे की तरह इतना परेशान हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है? पहले वैल्यू हो रही है 5, फिर वैल्यू हो रही है, फिर ये कह रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कह रहा है यहाँ पे ऐसे हो रहा है 5 × 4। तला 8 मिनट यार, ये क्यों वनान सो यार? सो क्यों वनान बकवासी? ये बोल रहा है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। यार कोई आया क्या स्ट्रीम में? यार कोई है क्या? कोई प्यार करने वाला तो आ जाओ भाई, कपड़े फाड़ दो अपने। कोई नहीं है भाई, अकेले।
यहाँ पे यार, including the sag now returns value in reverse order. 5 returns. तो गाइज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ऑनेस्टली, लेकिन कोई मेरा वीडियो दिख रहा है, चलो उसी के लिए मैं आगे ट्राई करता हूँ। कमेंट तो नहीं आया। Hey, hello, is this like print statements? Uh, what do you think, man? It's print, yeah. So yeah, it's a print statement. Yes. So do you know me, Ashley Ray? Uh, I I like programming, but I love to understand it, how it works, not just study it and remember it. So that's why I'm going into the depth of it, but I have not figured it out. Let's go. Okay. So this is saying that I can't see your comment. I'll turn the comments on. Just a second. I will turn this chat into the comments. If you're comfortable with it, I will have a pop-up on this side, and I'll also look at your comments while doing these questions. I'm not sure if you can see me at the. Okay, 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 okay. Okay, someone is watching. That's good for us. Okay, horizontal scrolling. Okay, not a good thing, but I love YouTube. I do RBLX coding. Very good. Automated earns help you more, man. I want to earn more. Okay, turn on. But let's go. I want to earn more. Is it on? Yes, you will now insert. YouTube will now insert ads for you. Okay. Of course, man. I want to do that as well. So now I will turn this pop out chat and you can see. Okay, you do roadblocks. Okay. RBLX. What is RBLX coding? What the hell is that? Roblox coding involves version of love in for to create interactive games. Teaching concepts like variables, functions, loops, logic by manipulating objects. Okay, okay, man. Okay, Roblox. Okay, buddy. That's amazing if you do that. But please watch my video till the end and suggest me if you can help me understand recursions because I'm struggling in it and I don't like to talk about it in my office because everybody is cramming there and using chat GPT. Most of the time, they don't even know what they are writing. So, yeah, please, if you can just suggest me something. What's your name, Ashley? Because in companies you can't understand things because there is not a lot of time. They are asking you, hey, kahan pahunche, where, what's the progress, hey, you were at this point at 11 p.m., what about 3 p.m., so you just use AI to get act like you know how it works even though you don't. So that's why I come here to be honest to myself that I love this and I'm not here for the
for the fame or anything. I just love programming and all. So here we go. My father told me not to talk too much until I figure out how the question is working. My father is my idol, so let's go. Okay, so this line says multiply factorial. So this line is saying multiply the value of 5 with this. So okay, so let me make it easy for you. When num factorial is called, okay, it has been passed this value, okay, but I have written it at the bottom because you call the function outside, from outside, okay. So I cut this line out and I put it here. For simplicity, the value of n is equal to 5. Okay, let's go. Let's check out this code now. So how is it working? Let's go. So it is saying if the value of n is equal to 0, then return 1. But we have as passed the value of n as 5. 5 is equal to 0. No way, buddy. You gotta be funny. False. So in programming, we write true and false. If a condition is true, if a condition is right, if a condition is right, we write true in programming. And if it is not, we write false. And these true and false are called Boolean values. Okay, only true value, only two values, true and false. Okay, guys. So uh, here we go. Let's get back to it. So in the next line, it is saying return 5 into factorial of 5 minus 1. Okay. So, Marcus Karantim poet ka. Tha. Okay. So here we are, return 5 into factorial. So this becomes return 5 star factorial 4. Okay. ठीक है. So in this, is there a comment by someone in here? It works. Yeah, people always use AI. I want to do it myself. It works like Lua. What is Lua, man? Okay. So three people are watching. Oh, we have great audience. I want 300 likes. Okay. So in this line, it is saying return 5 and then it is calling. So when we write this here, this is the function, okay? This is the name of the method that we are calling here, and we are calling it and we are passing it a value. So after after we are multiplying it with 5, we are also calling it again. I'm thinking if you are multiplying it with 5 and calling it again, how do you store the value? Where is the value? You are just writing 5 into I will do something later. What is the value of it? Right? Because programming data is stored in numbers. So I'm thinking, how is it working? How is this thing working? So, how to understand recursion and code? Let's go. Let's ask ChatGPT. How to understand recursion type questions. Let's see. Let's ask it for some advice. The main difficulty is to know, think about. Here's a clear method. 3 rules to understand recursion. Recursion means calling the function again and again. Trust the function. Do not expand everything at once. When you see factorial 5, if factorial 4 works, then factorial 5 is just 5 into factorial. You don't need to know how factorial 4 works yet. Trust it. So you know for sure. Follow one call down, then come back up. Apply this method to your example. Start with this example. Okay. 5 is not equal to 0. True. 5 into factorial 4. Go one level deeper. So guys, never ever think that Sam Altman is bad just because he's not from India. ठीक है उसकी वजह से बिकॉज ऑफ हिम आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इट इस वक्त 8-7 हुआ है इंडिया में भाई अपने इंडियन देश में 8-7 हुआ है किसको क्या पूछ सकते हो तुम कैसे पूछोगे किसी को इस वक्त भाई मुझे समझा देगा अपने पुराने टीचर को यही है एआई यही है भाई समाज तो भाई
समाज बढ़िया है। तो चलो आगे चलते हैं, बकवास बंद करता हूँ मैं अपनी। फैक्टोरियल 5 = 5 × फैक्टोरियल 4, बट आई एम सेइंग यार ये वैल्यूज कहाँ स्टोर हो रहे हैं? फैक्टोरियल 4 से जो वैल्यू आएगा, आप उसके बाद, एक सेकेंड, now go back up is the, this is where most confusion clears. Okay, 5 into factorial 5 is okay, factorial 1 is 1. Okay, so I understood it now. Okay, okay, let's go back. So what it does according to my assumption, I'm not a genius. So first we go with factorial 5. Okay, factorial 5 into factorial 4, then it gets the value of factorial 4. Inside factorial 4, it multiplies that value with 4 and then gets the fact value of factorial 3. And then it goes into the factorial 3, and then it multiplies the value of 3 with factorial 2. And then again until it becomes n becomes 0. If n becomes 0, it returns -1. It returns 1. Okay. Oh, I see. Yeah. How to answer recursion questions in exam. Okay. Okay, factorial 5. Oh, this is why I was not able to understand it. Just a second. Can you expand it? So I just needed pen and paper, man. A few days ago, someone told me, "Yo, why are you using pen and paper?" Okay. So step one, factorial 4, then 5 into. Oh, look at this. How is it? How easy is it now? Look at it. We finally got it. First, we have factorial 5. Okay. First, we have factorial 5. Inside factorial 5, we say 5 into factorial 4. Inside factorial 4, we say 4 into factorial 3. Inside factorial 3, we say 3 into factorial 2. And now factorial 0. Factorial 0 returns 1. So this is how it goes. Look at it. How difficult, how different is it from my assumption? For a human mind to assume nothing is impossible, but how difficult is it to assume for a normal human mind that this is what's happening behind the code? So, this is why it is so honest to love programming, right? Love the factorial question. So, this is how it works. Look at it, but it's fun. If you have the courage, if you are a man, be brave enough to. So I can do. Thanks a lot. That's a lot. So code is just learning maths as of right now. So it can do things. Apply the base. Substitute it. Hmm, 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 hmm. ओके। हाँ, मैं बोलो क्या हुआ? खाना आया, तुम मुझे बोलने आए, रियाज बोलने नहीं आया। चलो ठीक है, अच्छे हो तुम। रियाज, रियाज अभी आया, उसने मम्मा को बोला खाना का। तुम मेरे पास भी आए। तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। इसी तरह मैं आगे भी रहूंगा यार। ये रियाज साला, इसका कुछ करना पड़ेगा। जिसका साला। चलो गाइज, अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि यार मेरे पापा ने कहा तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। और अच्छे लोग अच्छे होते हैं, काइंड पीपल आर वेरी वेरी, यू आर लकी इफ यू हैव। Everyone has kind people. It's your choice. You choose the positive or the negative. Mhm. Let's go. So this is how it works. So this whole is okay. So now we have done it. So I think it's time for me to have dinner now. So guys, I will go and have dinner. So thank you. What's your name? So you just need to understand what that all means, and you can write it on your own. So that is some, that is the dream. That is the dream, Ashley. So I don't know if Ashley is still there, but Ashley, I don't know how to tag you on this one, but uh, I will go to your, I will pin this message, okay? Just as a reminder.
That's the dream. Bye, Ashley. Okay, thank you for watching, Ashley. You've been really kind. It's time for dinner now. And take care, Ashley. Don't trust strangers. Trust your relatives more than your friends. Trust your family first, then your relatives, and then listen to your friends. And you know everything, bro. If you are a good person, you study every day, you learn programming, you will get everything sorted. Financially takes some courage to do that, but in your life, simplicity will definitely solve a lot of issues and coding as well. If you understand the logic, life will become very, very simple. And work hard, Ashley. I'm proud of you, and I'm proud.